Good morning, team. The ABB news will have a rub-off effect on other capital goods company. So Siemens, Cummins, L&T, RVNL, even IRCON, these are few beneficiaries. And even in shipping companies like Cochin Shipyard, Musgon Dock, GRSE, no, and I was reading an article which said that hydrogen-based or a green fuel-based ship, Cochin Shipyard is building multiple layers. Now we discussed only about hydrogen. They are doing even in few other fuel systems. So that is likely positive, and most of the orders have come from European countries. So Cochin Shipyard is something we think from here on there will be a 20 to 25% rise in the next 1 year. Mahindra Holiday came with a fantastic results. So they have added almost 17,000 customers last full year, and their revenue also was fantastic. It was higher by 31% at 711 crores, and profit after tax was 56 crores versus 13 crores. And full year, their revenue was 2,500 crores, which was higher by 25%. And profit after tax, 115 crores, which is higher by 71%. So the commentary is more important. Let us see what is the commentary all about. But Indian Hotel will come up with the results in this week. We expect that to be even better than what Mahindra has reported. So Mahindra Holiday in the next 2 days after some consolidation will start up move. BSE India was one stock we said the cash in the balance sheet is more than 40%. So that stock with volume, it has given a breakout. It is a price volume breakout yesterday. So this stock, there will be a correction in the next 2-3 days. That would be a time to buy. We expect after post correction another 10 to 15% rise in BSE India. The price volume breakout was seen in Shriram Finance, CMS Info also, and India Infoline Securities, IIFL Securities. Now, after the results, I have told that the cash in the balance sheet is more than the market cap of the listed entity. So here, I think there is a huge opportunity in India Infoline Securities. Even Sundaram Fasteners is looking good. And there is one news, I don't know how far it is authentic, but it is tutored by Nilesh Shah of Kotak. So I don't think without substance he would have done it. Government of Gujarat announces policy for minimum level of dividend distribution and bonus share for its state PSU, including listed companies. But this was there for a very long time in making. So I think now they have implemented. The resolution was on 24th April 2023. So they say government companies minimum they have to pay profit after tax 30% as dividend. And like that, buyback also they have given condition. Even for bonus they have given, splitting of shares they have given. So there are many government entities which make huge profit, and if they start to pay huge dividend, that is going to be very positive. So we have selected few companies: Gujarat Alkali Chemical, GNFC, GMDC, GSPL, GSFC. So few, and even GSPC is there. So these are few companies which we need to watch out for. And there are few companies which have disappointed in the result. Rallies India in the last 4-5 years has been disappointment, but this time the disappointment is very high. So I think because they are in agro vertical, this will have an impact on Bayer Corp also. So that stock also might react. So staying away from Bayer Corp, Rallies India is safer. Even Tata Steel Long, the result was not up to the mark. So I think one has to be very careful there. Mega Money Finecom, they came with the results. So revenue was higher by 41% at 2,188 crores. And profit after tax was higher by 40% at
353 crores. Q4 FY23, their revenue was higher by 13% at 562 crores, and profit after tax was down by 22% at 77 crores, and that FY23 EPS is almost 85. The stock trades at a very attractive valuation. So any dip, could be an opportunity to buy in Mega Money Finecom. There are two companies, Mega Money Organic. We are talking about Mega Money Finecom. GMR Airport and NIIF announces partnership to invest in 3 airports. NIIF to invest 631 crores in upcoming Greenfield Airport at Mopa, North Goa. Bajaj Auto, they announced a dividend also, a very good dividend. It is 140 rupees, and they announced the results. Results are not up to the mark. The Q4 FY23 revenue was higher by 11.9% at 8,929 crores. Profit after tax again up by 11% at 1,704 crores. EPS for that quarter was 60 rupees. The full year EPS was 212. Well, it trades at 20 times the last year earnings. If they have 10-12% growth, then it trades very attractive, according to me, because they have a 2% dividend yield also. So FY23, the full revenue was 36,455 crores, higher by 9%. And the profit after tax was very flat. AU Small Finance Bank came with the results. The results on face of it looks very good. Because it is a low base, the growth is looking very high. So FY23 net interest income was higher by 37% at 4,425 crores. Profit after tax was higher by 26% at 1,428 crores. NIM, net interest margin, was at 6.1%. Even quarterly results, they were growing at 29% in net interest income. Profit after tax is higher by 22.7% at 424 crores. Tata Consumer came with the results. There also, the results were very good. Their profit after tax for Tata Consumer was higher by 21%. This stock also came in the volume price breakout. So a stock to watch, but because result is there, we normally do not advise to trade. 2 days before and 2 days after, we don't advise to trade. So here also things were very good. Revenue for the full year was higher by 11% at 13,783 crores. Profit after tax was higher by 30% at 1,320 crores, and the EPS for the full year is 13 rupees. NFL has inaugurated seed processing unit at Sanveer Road, Indore, on 24th April. This would help fulfill the demand of quality seeds to farmer. HDFC AMC, they have announced a dividend of 48 rupees, and their revenue and profit after tax was almost flat. So nothing major to say on that. Nippon AMC, they also announced a dividend of 7 rupees 55 paisa, but this is subject to approval in the AGM on July 12th, 2023. Their total income was higher by 4.3% at 388 crores. This is Q4 FY23 results, and their profit after tax was higher by 13.7% at 198 crores. Not a great results, but the dividend yield, the full year, if you take note, it is 12.5, 12 rupees 50 paisa. That is coming to more than 5.5% for the current market price. So high dividend yield stock, almost 95% of their profit goes as dividend. So we will be getting continuous dividend, and whenever the growth starts to pick up, it will benefit us. Mahindra CIE came with the results. On the face of it, result was very good. So revenue was higher by 13% at 1,354 crores.
EBITDA margin also improved. This is after adjusting for land sale. It is at 15.7%. The full year consolidated revenue is higher by 19% at 2,320 crores. Profit after tax was higher by 34% at 220 crores. VST Industries, they have announced a dividend of 150 rupees. And last news is on Mahindra Life. They also came with a good results, but important is the result might not look so great, but their projects, which is in line, that is more important. They are saying, the total residential pre-sale was 1,812 crores and industrial land lease was 456 crores, which where once it is handed over only they can, and the gross development value which is there still, which will take another 13 to 14 months, is 4,050 crores. So I think over a period of time, Mahindra Life will generate wealth. So 3 Mahindra group. I will not say Mahindra CA as a group, but 3 Mahindra tag companies have come with results, and all 3 are very good. With that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. हम इस कॉल पे हिंदी में करते स्टार्ट करते हैं। भारत के रिजल्ट के सब नतीजे देखिएगा तो हमारे अनुमान से कम थे, एस्टिमेट से नीचे थे। 11% के हिसाब से रेवेन्यू इन लाइन था एस्टिमेट से, जो कि वॉल्यूम 12% के आसपास था और 16% वाई था। नंबर्स में देखा गया कि हायर ओपेक्स था, जो कि रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से जो 1014 पर टन थी, जो कि 600 650 थी क्वार्टर वाई। फ्यूल कॉस्ट में देखा जाए तो डिक्लाइन था शार्पली, जो कि क्वार्टर 353 पर टन और 1177 पर टन के साथ। EBITDA मार्जिन देखा तो 18% है वर्सेस 19% है। नेट EBITDA पर टन देखा जाए तो 955 था 1022 करोड़ के सामने। उन्हें रिपोर्ट किया 5 बिलियन का, जो कि प्रॉफिट है एसोसिएट कंपनी से 5.2 जो कि इनका फैक्ट्री बिजनेस है। एक्सेप्शनल लॉस है ड्यू टू रिडक्टिव सील की वजह से, जो कि 1.4 बिलियन टन के 1000 करोड़ का। नेक्स्ट है वीआईपी इंडस्ट्रीज है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने क्लैरिफाई किया फाइलिंग में कि एडवर्टाइजमेंट जो एक सोशल मीडिया वेबसाइट की चल रही है वो उनकी नहीं है, और उन्होंने वीआईपी एपीएस आ रहा है तो उन्होंने इन्फॉर्म किया मेटा स्टॉक को भी इसको रिमूव करने के लिए, जो कि फेसबुक कंपनी है, और लीगल रिकोर्स सीख करने के लिए ट्राई किया। बिरला सॉफ्ट सॉल्यूशंस की जो होली ओन सब्सिडरी है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड की, उन्होंने एग्रीमेंट सेटलमेंट किया म्यूचुअल रिलीज एग्रीमेंट इन बाकी कॉप के साथ। ये एग्रीमेंट रहेगा जबकि कंपनी ने चैप्टर 11 जो कि बैंक्रप्सी फाइल किया गया था और यूएस कोर्ट्स में, और एज पर सेटलमेंट एग्रीमेंट जो कि अप्रूव हो गया 24 अप्रैल को यूएस सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम से। और बीएसआई को मिलेगा 2 मिलियन, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंडिंग रहेगी 31 मई 2023 के लिए। अपार्ट ओवरऑल आईटी सेक्टर रिमेन प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि पोस्ट रिजल्ट के बाद एफआरबी बैंक के रिजल्ट्स थे वो सेंटिमेंटली नेगेटिव थे, तो आज आईटी कंपनी पे थोड़ा मुझे लगता है प्रेशर आते हुए दिख सकता है कि बीएफसी सेगमेंट्स को इनडायरेक्टली लिंक कर रहा है। अनुपम रसायन ने कहा कि उन्होंने एक साइन किया एलओआई, जहाँ से उन्हें रेवेन्यू मिलेगा 46 मिलियन, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 380 करोड़ का है। लीडिंग अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जो कि सप्लाई करे न्यू स्पेशलिटी केमिकल एडवांस इंटरमीडिएट फॉर नेक्स्ट 5 years के लिए। ये मॉलिक्यूल है एडवांस इंटरमीडिएट और निश फ्लोरोनेटेड मॉलिक्यूल के, और जो यूज करेंगे प्री बिल्डिंग ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग हाई एंड इंजीनियरिंग फ्लूइड्स में और एपीआई इंग्रेडिएंट्स में भी यूज होगा। एबीबी के देखिए जो ग्लोबल के पैरेंट के नतीजे आए थे, पैरेंट ने जो फुल ईयर का रेवेन्यू बहुत ही डबल कर दिया, जो कि करंटली 5% है, और ये हमारे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स पे लग रहा आते हुए, जो कि इंडिया के 9% के आसपास इंडिया से, ऑर्डिंग स्ट्रेंथ साउथ अमेरिका और इंडिया को ऑफसेट करेगा, जो थोड़ा सा वीकनेस है चाइना में। सो एबीबी का अगर हम देख रहे हैं रब ऑफ इफेक्ट अगर रहेगा तो सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स में रहेगा। कल हमने देखा इसमें थोड़ी सी अपटिक भी, जैसे सीमेंट्स हो गए, क्यूमेंट्स हो गए, आरबीएनएल आ गया, एयरकॉन आ गया, और जो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स है जो कोचिंग शिपयार्ड जीआरएसी लगभग स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। कोचिंग शिपयार्ड देखा जाए तो हाइड्रोजन बेस्ड शिप बिल्डिंग कर रहा है, और ये मल्टीपल लेयर फ्लूइड बेस में कर रहा है, हाइड्रोजन बेस्ड और क्लीन एनर्जी बेस के लिए। तो यहाँ से हमें लगता है अगले 20 से 25% के रिटर्न के लिए यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड में हमें फोकस करना चाहिए, और नीचे के अलावा हमें थोड़ी सी एक्टिवेशन करनी चाहिए। एमएचआरएल के भी नतीजे एकदम फैंटास्टिक थे। 17,000 नए कस्टमर्स हमने जोड़े। रेवेन्यू देखा जाए 31% हायर था, 711 करोड़ का। पैट देखा जाए 56 करोड़ के आसपास था वर्सेस 13 करोड़ का। फुल ईयर का रेवेन्यू देखा जाए तो 2,500 करोड़ के आसपास था, 25% का जंप देखा था। पैट 115 करोड़ का देखा, जो कि 71% हायर था। इंडियन होटल्स के भी नतीजे आएंगे। महिंद्रा हॉलीडे से भी हमें लगता है नतीजे अच्छे रहेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर कंपनी है। सो इसके भी नतीजे वीक में शेड्यूल है। बीएसए इंडिया के भी देखे गए तो कैश अगर 40% है, पर हमने उसका प्राइस वॉल्यूम टेकआउट दिखाया, तो हमें अभी इस लेवल पर नहीं देना, यहाँ से थोड़ा करेक्शन आता है
तो हमें उसको स्टॉक में एक्टिवेट करना चाहिए। हमें लगता है अगले 2 से 3 दिन में या शायद बीच में अगर करेक्शन है तब लेना चाहिए। 10 से 15% के रिटर्न के आसपास में हमें फोकस रखना चाहिए। अगर वही सेम प्राइस वॉल्यूम देखा स्टॉक में देखा तो श्रीराम फाइनेंस में भी हमने देखा, CMS इंफ्रा सिस्टम में देखा, IIFL सिक्योरिटीज में भी देखा गया, जिसमें था IIFL सिक्योरिटीज में कल हमने कहा था कि उनका कैश जो है मार्केट कैप से ज्यादा है, तो एक ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम हमें कोई आउट परफॉर्म कर सकता है। सुंदरम फास्टनेस इस स्टॉक में भी हमें फोकस रखना चाहिए। कल नीलेश शाह जो कि कोटक सिक्योरिटीज के हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कहा कि जो गुजरात की ऐसी कंपनीज और जो स्टेट पीएसयू गुजरात बेस्ड उन्हें कंपल्सरी डिविडेंड देना पड़ेगा 30% के आसपास, जो कि पैट के बाद रहेगा। और उन्होंने बोनस बायबैक और स्प्लिट्स के लिए भी अलग अलग रेगुलेशन फाइल किए। सो ओवरऑल अगर 30% डिविडेंड आ रहा है तो ये सब ओवरऑल एक इंडस्ट्री के सेंटिमेंट के हिसाब से बेटर रह सकता है। और अगर हमें गुजरात बेस्ड कंपनीज में फोकस रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुजरात एलकेडी हो गया, गुजरात GNFC हो गया, GMDC हो गया, GSPL हो गया, GSFC हो गया, GSPC हो गया, सो ये सब स्टॉक्स में हमें ध्यान रखना चाहिए। हाल संडे के भी नतीजे जैसे कि देखे गए 2-3 क्वार्टर से खराब ही आ रहे थे, इस बार और ज्यादा खराब थे। एग्रो वर्टिकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हमें लगता है पेयर कॉप में भी नतीजे खराब रह सकते हैं। टोटल ओवरऑल सेटअप अच्छा नहीं दिख रहा है। एक मिनट फाइन टाइम 2188 2188 करोड़ के आसपास का था। और पैट देखा जाए तो 40% हायर था, जो कि 353 करोड़ का था। Q4 में रेवेन्यू देखा जाए तो, और Q4 का रेवेन्यू देखा 17%, जो कि 562 करोड़, पैट देखा जाए 77 करोड़ के नीचे। इनकेस देखा जाए तो 85 रुपीज का है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसमें दो कंपनी मेगमनी ऑर्गेनिक्स और मेगमनी के, तो हमने मेगमनी कंसिडर करें। CM और NIIF ने एक पार्टनरशिप की है 3 एयरपोर्ट्स बिल्डअप करने के। NIIF का 631 करोड़ का है और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट रहेगा मोगा में। बजाज ऑटो के भी नतीजे देखे 140 रुपए का उन्होंने डिविडेंड सबसे पहले दिया है, जो कि बट रिजल्ट ओके है, नॉट अप टू द मार्क। देखा गया Q4 का हमने देखे तो 11% हायर था और पैट देखे जाए तो लगभग 11% हायर 74 के आसपास था। और EPS देखे जाए 60 रुपीज का था। वैल्यूएशन देखे जाए 28 के आसपास है। अगर ये अर्निंग्स को तो ये काफी रन अप करते हैं 10 से 12% की, जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में हमें थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। और फुल ईयर का हम देख रहे हैं तो 9% के आसपास का रेवेन्यू में जंप था और पैट देखा जाए तो फ्लैटिश था। सीयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नतीजे बेहद अच्छे थे, क्योंकि स्मॉल भी से तो ग्रोथ में हमें बहुत अच्छी जंप आते हुए देखी, जो कि NII में दिख रहा है 37% का जंप था। और पैट देखे जाए तो 26% आया था, जो कि 1428 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.1% का है। और अगर हम फुल ईयर का रेवेन्यू देख रहे हैं, क्वार्टर का रेवेन्यू देख रहे हैं, तो 29% NII में जंप था और पैट देखे जाए 22% आया था, जो कि 424 करोड़ का है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से भी नतीजे आए थे। रेवेन्यू देखा जाए तो 21% आया था। गुड रिजल्ट से वॉल्यूम टैक्स ब्रेकआउट कंपनी स्टॉक में देखा गया। और अगर हम फुल ईयर का देख रहे हैं तो पैट 30% आया था, जो कि 1320 करोड़ का है। जैसे हम कहते हैं कि अभी स्टॉक से अभी रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद थोड़ा या सेटलमेंट होने के बाद इस में फोकस रखना चाहिए। HDFC AMC के भी नतीजे भी एकदम फ्लैटिश थे रेवेन्यू और पैट स्टैंड पे, और उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया 48 रुपीज का। पौन AMC के रिजल्ट आए थे, अगर डिविडेंड देखा जाए 7.5 रुपए का था। और बट ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल रह सकता है। पर अगर रिजल्ट देख रहे हैं तो रिजल्ट ओके स्टे 4.3% का ग्रोथ देखा गया। रेवेन्यू में पैट 13% हायर था और 998 करोड़ था। अगर हम डिविडेंड पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो 5.5% के आसपास का ईल्ड बन रहा है। बड़ा यहाँ से हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट जब भी ये स्टॉक अपने अपटर्न में आएगा तो यहाँ से अच्छा रिटर्न आते हुए देख सकते हैं। महिंद्रा CI के भी नतीजे देखेंगे। रेवेन्यू हायर है 13% के आसपास, जो कि 1354 करोड़ का है। EBITDA देखा जाए तो 15.7 का है। फुल ईयर का रेवेन्यू देखा जाए 19% था और पैट देखा जाए 34% आया था, जो कि 220 करोड़ का है। और महिंद्रा लाइफ के भी नतीजे अच्छे थे, ओके थे। और उनकी जो प्रोजेक्ट्स देखे जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन में है। तो इनकी फीसेज देखी जाए तो 1812 करोड़ की है। और इंडस्ट्रियल लैंड देखी जाए तो 456 करोड़ की है। सो ग्रॉस अगर हम देख रहे हैं तो नियर अबाउट 13-14 में देखा जाए 4050 करोड़ के आसपास के आ सकते हैं। The derivative and technical updates. On technical front, Nifty yesterday traded with a sideways range with a bullish bias. If you see on the daily chart, index has a witness a breather after its Monday session gains and form a doji candlestick pattern. So any declines close to 17,700 levels should be viewed as adding long trades. And moving average support around 1500, a simple moving average is placed at 17,500 levels. So which is a lower demand zone, and 18,000 should be resistance for the Nifty.
Bank Nifty front, Bank Nifty also traded sideways yesterday. On the daily chart, technical setup is still bullish. So, however, ahead of monthly expiry, profit booking was visible, which dragged the price lower, close below the open in red. Now, as long as 42,000 levels are held, correction in the banking index should be viewed as an opportunity to add a stock specific long. So 43,500 level act as a resistance and 41,500 will act as a support zone. In banking segment, PSU banking stocks looking good. So one can look that segment. So in that, Canara Bank, Federal Bank, Bank of Baroda, SBI, Union Bank is looking good. On the derivative front, yesterday Nifty future witnessed a short covering of around 2.43% and decline of 2.89 lakh shares. So PCI recovered from 1.13 to 1.16, and maximum OI was seen at 18,000 call option and 17,800 call option. While on the put option front, 17,700 and 17,600 put option, which may act as a support zone. Bank Nifty 2 witnessed a short covering to the tune of 10.9%, decline of 3.41 lakh shares. So PCR is a decline from 1.25 to 1.05 levels, but still both the PCR is above 1 levels. The maximum OI seen at call option front is the 43,000 call and 42,800 call option, while on the put option, 42,500 put option. In the stock specific segment, fertilizer stocks are looking good. One can look for the RCF, Deepak Fertilizer, and PSU banking stocks. Apart from that, Exide Industry, Britannia is looking good. On the FII front, FII added a longs of around 5,895. So net short by minus 13,428. So ratio is around 45%. In the cash segment, FII sold 407.35 crore and DI bought 563.61 crore. So that's it from my end. Now I will hand over to Bhavesh for further research update. Yeah, hi, good morning, team. So starting with the results of Dalmia Bharat. So Dalmia Bharat results were slightly below consensus estimates. EBITDA number was 11% below consensus estimate, although volume and revenue growth overall was in line with our expectations. So miss on EBITDA was mainly because higher than expected operating capex. Raw material cost was at 1014 rupees per ton, uh, which is like a very strong increase compared to YOY. It is almost 60% increase. As per PPT, capex plan has been reiterated for FY24, so there are no changes. And overall, I think new result would be kind of neutral. Secondly, on VIP Industries, so the company has clarified via their filing that there are some advertisement on social media that are not done by them, but it uses their name VIP as a brand. So the company has taken seek some legal recourse, and also they've informed Facebook to remove all these ads. Then on Birlasoft, so there is one negative development in its subsidiary Birlasoft Solutions, where it has entered into a mutual settlement agreement with its customer in Invacare. Now Invacare had filed for bankruptcy on in February. So overall, this kind of news is negative not only for Birlasoft but also for IT sector as a whole. Then on Anupam Rasayan, so Anupam Rasayan has signed a LOI worth $46 million with one of the multinational American companies to supply new age specialty chemical advanced intermediate over the next 5 years. So this is positive for the company. Then on ABB, so on ABB, the parent company ABB Global has given a full year guidance for has raised the full year guidance from 5% growth to now 10% growth. So this is very positive for the global company, and as such, this will have a sentimentally positive impact on the Indian entity ABB.